में and I will be handling the next few sessions. Like I'll be handling few chapters in the paper one foundation accounting. Okay, so today the next four classes, if you see, that's been lined up for the completion of two chapters. That's chapter number 3, BRS, chapter number 4, which is inventories. Okay, so now today we are going to start with BRS. So what is my teaching pattern? तो मैं कैसी पढ़ाती हूँ और what I will be doing is your institute material will be the base. तो सभी whenever you are seeing my class or something, I will be solving all the illustrations. Maximum all the illustrations we will be solving it in the class. तो इसलिए थोड़ा हम फास्ट में करेंगे. So I will be doing it a little fast. Concept सभी I'll be doing it in the normal pace, no problem. Videos are recorded. You can go still view it back. Whatever I'm going to teach today, मैं आज जो कुछ भी पढ़ाती हूँ क्लास पे, यू हैव टू गो बैक. आपको नोट्स बनाना पड़ेगा. यू हैव टू री प्रैक्टिस द इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हम आपको एक एक चैप्टर के लिए असाइनमेंट भी दिया जाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग. तो अकाउंट्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट बट ओनली इफ यू प्रैक्टिस. ओके, आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो. यू कैंट रीड अकाउंट्स. यू हैव टू प्रैक्टिस. यू हैव टू राइट. Your speed will improve, presentation skills बढ़ जाएगा. The more you practice, the more scoring subject becomes your accounting. Is that clear? So now we are going to start with the bank reconciliation statement. So what is the meaning? तो पहला, आपको चैप्टर में पढ़ने के पहले you should first understand what is the topic. Okay? So what is bank reconciliation statement? So madam, इसका मतलब क्या है madam? Reconcile. तो the thing is, रिकनसाइल का मतलब है कि दो लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड दोनों के बीच में कुछ झगड़ा आ गया. तो व्हाट इज द मेन थिंग? इफ यू एंड योर फ्रेंड आर फाइटिंग, व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू विल थिंक, ओके चलो enough of fighting, let us sit and come to a compromise, let us adjust and see what is happening. So this process of coming to a compromise को हम reconciliation बोलते हैं. Please stop raising your hands. I don't want unnecessary chat boxes, anything being typed on the chat box distracting. Okay, प्लीज लिसन टू द क्लास. अभी तो मैंने स्टार्ट किया, तो व्हाई आर यू इवन रेजिंग योर हैंड्स? प्लीज गिव सम टाइम. ओके, सो नाउ उन उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हो सकता है. सो उन डिफरेंसेस के वजह से वो दे आर फाइटिंग. तो अभी हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और उस डिस्कशन में चले जाते हैं. सो उसको हम रिकंसिलिएशन बोलते हैं. सो रिकंसिलिएशन का मीनिंग है दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है. देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस क्या है, किसके लिए झगड़ा हो रहा है, किसके लिए ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. उस सब को लेके, ओके, उस सब को लेके आप उसको समझ के, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंसेस, आप उसको कुछ ट्रीटमेंट करते हो. ट्रीटमेंट के मतलब क्या है? बोथ ऑफ देम, चलो मैं इस तरफ इतना आती हूँ, सो आई विल कम डाउन फ्रॉम माई पर्टिकुलर वे. ओके, your point is this, no? Okay, I understand, so I will come down a little bit. The other person will also say, okay, I will also come down a little bit. तो ऐसा रिकंसाइल करने के बाद दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, उसको हम रिकंसिलिएशन बोलते हैं. तो मैडम, व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट दैट इन आवर अकाउंट? सो ये इसका क्या लॉजिक है, क्या मतलब है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आजकल बिजनेस और एन इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो, ओके, आप एक बिजनेस को स्टार्ट किया हो, दैट्स ऑल्सो ओके, बट नाउ एवरीबडी हैज अ बैंक अकाउंट. तो मैंडेटरी बन गया है. आपको बिजनेस के लिए कुछ पैन अप्लाई करना है और नहीं तो एवरीवेयर द बैंक अकाउंट इज बिकम अ काइंड ऑफ अ प्रूफ. आपका एड्रेस प्रूफ बन गया है, तो आप बैंक अकाउंट खोल ही देते हो. So now coming to the point, when we talk about bank reconciliation statement, the major part, the first part is the bank. तो बैंक में जाके यू विल ओपन एन अकाउंट. अकाउंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बेसिक से हम पढ़ते हैं दो तरह का अकाउंट्स होते हैं एट लार्ज, सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट हम ओपन करते हैं इंडिविजुअल के लिए. जब आप बिजनेस करते हो, आपको करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा. क्लियर? सो तब हम अकाउंट्स, और व्हेनेवर वी आर रीडिंग अकाउंट्स, वी ऑलवेज सी इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. तो अभी मैं एक बिजनेस हूं, मैं जाके आई हैव ओपनड एन अकाउंट इन सपोज से इंडियन बैंक एंड दैट इज माई करंट अकाउंट. ठीक है, तो मैं जाके एक अकाउंट को ओपन किया है. अकाउंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट? उसका मीनिंग है वेरी सिंपल. आपके पास जो कुछ भी कैश है, उसको आप सेफली रखने के लिए आप बैंक अकाउंट को ओपन करके वहां पे डिपॉजिट करते हो. यानी नाउ
प्रेजेंट सिचुएशन पे देखने से सब कुछ डिजिटल बन गया है। तो आपका कुछ ट्रांजैक्शंस है, आप जीपे में करते हो, आपका बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। फोन पे बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। कार्ड को स्वाइप करते हो, वो बैंक अकाउंट से आपका डेबिट हो जाएगा। सो ऑल दिस एलिमिनेट्स, आप कैश कैरी करने का वो वॉट एवर इज दैट नेसेसिटी, उसको हम रिड्यूस करके डिजिटली हम सब कुछ कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज नाउ। बट ओल्डन डेज में क्या करते थे, बिजनेस पे कुछ ज्यादा कैश है, सो सिक्योरिटी रीजंस के लिए दे विल गो एंड डिपॉजिट इट इन द नियर बाई बैंक्स इन देयर अकाउंट्स। ओके, सो दिस इज द नीड वाई वी आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। Okay. Now, madam, I understood why we open a bank account. Now come to the third part, which is the statement. तो हम बैंक में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए हमको कुछ स्टेटमेंट मिलता है क्या? यस, बैंक हम हमारे लिए आवर ट्रांजैक्शंस दे मेंटेन अ रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट। और ओल्डन डेज में हमारे पास एक पासबुक था। इफ यू रिमेंबर योर पेरेंट्स, दे यूज टू हैव दिस पासबुक, इवन नाउ यू हैव। ओके, यू विल गो एंड पुट इट इनसाइड। आप एक ट्रांजैक्शन करने के बाद इफ यू गो टू द काउंटर एंड गिव योर पासबुक, दे विल प्रिंट इट। और नाउ पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स आर देयर इन द एटीएम्स इटसेल्फ। आप जब कैश को विड्रॉ करके आपको बैलेंस को रिकॉर्ड बनाने के लिए यू कैन पुट द पासबुक इनसाइड दैट, इट विल प्रिंट एंड शो यू द करंट बैलेंस। सो the record that the bank will maintain for our transactions will be in either passbook, यानी आई डोंट हैव टाइम मैडम, मैं पासबुक को कहाँ पे लेके जाती हूँ, बहुत सारा काम है। देन व्हाट हैपेंस, आप जब आपको ईमेल आईडी को रजिस्टर करवाते हो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, दे विल सेंड यू द बैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली इनटू योर इनबॉक्स। ओके, तो इस तरह का कौन सा, हु विल मेंटेन द रिकॉर्ड? बैंक वालों हमारा रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। देन वही रिकंसिलिएशन तो दो पीपल होना है ना। So the one part is the bank transactions, the other part business और individual खुद का कैश बुक को मेंटेन करते हैं। करेक्ट? मैं एक बिजनेस आज ही स्टार्ट किया है, तो व्हाट आर द बुक्स दैट वी मेंटेन? आप बेसिक्स पढ़, यू वुड हैव रेड द बेसिक्स इन चैप्टर नंबर 2। इट टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक एक ही यूनिट में आता है, कैश बुक। कैश बुक में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंपल कैश बुक, जस्ट कैश कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। 3 column cash book, cash, discount, bank column. That means the business also records the transactions that we are doing through the bank. आप जब चेक को देते हो, आप जब चेक को रिसीव करते हो, ये सभी का सभी चेक यानी डीडी, यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो तब आप ट्रांजैक्शंस इस सारी तरह के इंस्ट्रूमेंट से करते हो। when you do your transactions based on these particular instruments, then you will record it under the bank column. तो हम, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, तो हम रिकंसिलिएशन के बारे में बोल रहे हैं। कौन सी दो बुक्स के बीच हम कंपेयर कर रहे हैं? पासबुक जो बैंक वालों मेंटेन करता है, और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं। तो दोनों के बीच में डू यू विल यू हैव एनी डिफरेंस? टेक्निकली यू शुड नॉट हैव। सेम ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे कैश बुक में लिख रही हूँ, बैंक वालों पासबुक में एंट्री दे विल बी राइटिंग। then why madam there is a difference? Yes, there can be differences between your cash book and your bank passbook. उसके लिए we are reading this chapter. Is this clear, the basic part of it? What are the two things that we are trying to compare here? Okay, the two things that we are trying to compare here is nothing but, okay, the two things that we are trying to compare here is the cash book and the passbook. ओके, इट इज द कैश बुक एंड द पासबुक। कैश बुक मीन्स मैं बैंक कॉलम के बारे में बात कर रही हूँ, एंड पासबुक मीन्स इट्स जस्ट द पासबुक ओनली। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, बैंक पासबुक का फॉर्मेट कैसे होता है। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द फर्स्ट थिंग इज कैश बुक। कैश बुक में इफ आई राइट कैश बुक, एवरीबडी, वो मीनिंग क्या है कि ये पास बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मैं उसी को लिख रही हूँ। ओके, नाउ यू टेल मी
हम when we will debit the cash book, when I receive money, correct? When I receive money, I am going to debit my cash book. Okay. when I make some payments, मैं जब पेमेंट्स करती हूँ उसको मैं क्रेडिट करती हूँ कैश बुक पे. वाई मैडम? ये तो गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, वो प्रिंसिपल्स यू हैव टू रीड बेसिकली. तो कैश इज लाइक योर असेट, करेक्ट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. आप जब रिसीव करते हो मनी को, वो अंदर आ रहा है, दैट इज वाई यू आर डेबिटिंग इट. आप जब पेमेंट करते हो, मनी गोइंग आउट, that is why you will credit it. Basic meaning is this only. Clear? Now, madam, बैंक पासबुक कैसे होता है मैडम? वेरी सिंपल. बैंक पासबुक ऐसा लेजर टी फॉर्मेट में नहीं होता है. इट विल बी अ स्टेटमेंट. इट विल बी डेट, particulars, the check number, and then you will have debit, you will have credit, and also the outstanding balances. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाता है. The same thing. Okay. But my dear students, there is a small thing that you need to understand. यहाँ हमारे बुक्स में जब हम मनी को रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं डेबिट करो कैश बुक को. हम जब पेमेंट्स करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट करो. करेक्ट? बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डेबिट एंड क्रेडिट इज रिवर्स फॉर द पासबुक. आपको मैसेज आता है जब when you receive money into your account, what is the message that you get? You get your account number so and so is been credited with. जब आप मनी को रिसीव करते हो कैश बुक को, और कैश बुक में उसको आप डेबिट करते हो, बट द सेम टाइम इन योर पासबुक यू विल बी क्रेडिटिंग द अमाउंट. बिकॉज बैंक पासबुक के लैंग्वेज में जब मनी आता है उसको बोलते हैं अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. जब मनी बाहर जाता है उसको बोलेगा डेबिट हो गया आपका अकाउंट, पेमेंट चला गया, तो देर इज अ डेबिट. तो द फर्स्ट एंड द बेसिक फाउंडेशन हमको ये बात समझ में आना है कि कैश बुक और पासबुक होते हैं मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस का मीनिंग क्या है? आप जब मिरर में आपको आप देखते हो, राइट बन जाता है लेफ्ट, लेफ्ट बन जाता है राइट. करेक्ट? द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर, बट यहाँ पे हैंड्स नहीं है. क्या है? बैलेंसेस. द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज नथिंग बट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक. रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या है? डेबिट साइड ऑफ द सीबी. सीबी का मीनिंग कैश बुक. ओके. डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक should always be equal to the credit side of the passbook. PB means passbook. Okay. फर्स्ट रूल है. और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक शुड बी इक्वल टू डेबिट साइड ऑफ द पासबुक. तो ये वाला बदल जा रहा है. डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट. दैट इज वाई वी कॉल देम एज द मिरर इमेजेस. Clear everybody? Did you all understand till this the point number 1? Now we understand, go to point number 2. Okay. So now coming back to the point number 2, madam, question में हमको debit balance, credit balance, this is not given. They are saying favorable balance, madam. तो उसका meaning क्या है? जब हम balances के बारे में पढ़ रहे हैं, you should understand completely. आप you tell me, you tell me, फेवरेबल बैलेंस कब होता है हमारा पास? फेवरेबल बैलेंस तभी होता है व्हेन वी हैव मोर मनी. करेक्ट? हमारे पास मोर मनी है से उसको हम बोलते हैं फेवरेबल. हमारे पास मनी नहीं है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, दैट मीन्स मनी बिकम्स लेस. करेक्ट? तो उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस. अभी नाउ कम बैक, इस कॉन्सेप्ट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल को वी विल अप्लाई इट हियर. ओके. नाउ प्लीज रीड. डेबिट ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट ऑफ द पासबुक. इसमें मनी आ रहा है. आर यू गेटिंग मनी और यू आर गिविंग मनी? एवरीबडी. डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक का मीनिंग क्या है? मनी आ रहा है. वी आर रिसीविंग मनी. तो व्हेन वी आर रिसीविंग मनी, इसको हम बोलते हैं
favorable balance. That means, in other words, my dear students, debit balance of the cash book और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, इन दोनों बैलेंसेस को हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं बिकॉज मनी आ रहा है, वी आर गेटिंग मनी, दैट इज वाई फेवरेबल. देन व्हाट विल दिस बिकम? क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक. डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक का मीनिंग क्या है? आप मनी को पेमेंट कर रहे हो, मनी इज गोइंग अवे. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ये बन जाता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस. मैडम देन व्हाई आर वी रीडिंग फेवरेबल एंड अनफेवरेबल? आई विल टेल यू, बट कॉन्सेप्ट को यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट. when you understand the concept, solution solving questions बहुत easy बन जाता है. okay, so what did we learn first? reconciliation हम दोनों के बीच करते हैं, उन दोनों इस पर्टिकुलर चैप्टर में है. कैश बुक, कैश बुक का मीनिंग है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. पासबुक है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेस. हम मेंटेन करते हैं हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड और प्रूफ, वी मेंटेन इट इन द कैश बुक. तो तब हम बैंक में अकाउंट को खोलते हैं, बैंक वालों भी हमारा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको वो किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? बैंक बुक और इन द बैंक स्टेटमेंट्स. ओके, दीज आर द टू बुक्स विद इन विच कुछ डिफरेंसेस है, हम उसको रिकंसाइल यानी सॉल्व करना है. क्यों डिफरेंसेस है, कैसे है, एनालाइज करके क्या करना है, उसके बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर है. ओके, तो फर्स्ट हमने व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? कैश बुक का फॉर्मेट टी शेप का फॉर्मेट होता है, और किसको हम डेबिट करते हैं यहाँ पे? जब हम मनी को रिसीव करते हैं, वी डेबिट दैट, and when we make payment we credit that in the cash book. So debit balance of the cash book and then credit balance of the cash book, ये दोनों होता है यहीं पे. इन द बैंक बुक ऑल्सो, इन द पासबुक ऑल्सो ये दोनों डेबिट क्रेडिट होता है, बट क्वाइट ऑपोजिट बन जाता है. जब आप रिसीव करते हो कुछ अमाउंट, उसको हम बोलते हैं बैंक के लैंग्वेज में आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है. व्हेन यू गेट मनी दैट विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, करेक्ट? व्हेन यू मेक अ पेमेंट थ्रू द चेक, उसको हम बोलते हैं आपका अकाउंट डेबिट हो गया है. ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टूड, योर कैश बुक एंड पासबुक आर मिरर इमेजेस. लेफ्ट बन जाता है राइट, राइट बन जाता है लेफ्ट, बट हियर लेफ्ट राइट नहीं है. डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक होना है इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, बिकॉज बोथ ऑफ देम रिसिप्ट ऑफ मनी. हम जब मनी को रिसीव करते हैं हमारा पास फेवरेबल पोजीशन होता है, तो इन दोनों बैलेंसेस को हम फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते, we can call that as favorable balance also, because in few problems वो debit balance या credit balance नहीं देगा, he will just tell you favorable balance, that's all. तो if he gives you, आपको क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस है कैश बुक में. और यानी इफ द क्वेश्चन सेज फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स फेवरेबल मीन्स क्रेडिट बैलेंस इज देयर. तो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे सकता है और एल्स फेवरेबल बैलेंस भी दे सकता है. दोनों का एक ही मीनिंग है, बोथ ऑफ देम मीन द सेम. ओके, when you go to an unfavorable position, when your expenses are more, when will the expenses be more? or when expenses are more, आप कैश बुक में उसको क्रेडिट करते हैं और बैंक बुक में पेमेंट्स को डेबिट करते हैं. दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1. अभी हम जाते हैं द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों मैडम डिफरेंसेस है? वाई आर देयर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द बुक्स मैडम? सिंपल, द डिफरेंसेस कैन बी क्लासिफाइड मेजरली इनटू 3 कैटेगरीज. कितना कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं हम ये वाला डिफरेंसेस को. ओके, वेरी इजी चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट करके आप क्लास में जो कुछ भी सुनते हो वो 20% है. जब आप घर में जाके जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हो वो होता है 30%. एंड देन व्हेन यू कीप री प्रैक्टिसिंग दैट बिकम्स योर रिमेनिंग 50%. ओके, हाउ मेनी अवर टाइम्स यू प्रैक्टिस, दैट मेनी अवर टाइम्स यू विल बी थरो. पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस. इसमें 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर. ओके, पहला होता है चेक deposited but not cleared. ये वाला आपको मेमोराइज करना है. चेक डिपॉजिट हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है. ओके, सो चेक deposited but not cleared. There's a little blur that will get adjusted.
कोई चिंता नहीं है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. द सेकेंड वन होता है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ओके, ये दोनों होता है ओनली टू टाइमिंग डिफरेंस में. तो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस. ओके, चेक डिपॉजिटेड का मीनिंग क्या है. बिजनेस में हूं, बिजनेस को एक चेक रिसीव हुआ है. व्हाट विल हैपन और व्हाट इज द मीनिंग. बिजनेस को चेक रिसीव हुआ है. द मोमेंट में जैसे भी चेक को रिसीव करती हूँ, वेयर विल आई मेक द एंट्री. मैडम, कैश बुक में आप एंट्री करते हो बैंक कॉलम पे. तो बैंक कॉलम पे 100 रुपीज का चेक एबीसी लिमिटेड से मिला है. तो जैसे मैं चेक को रिसीव करती हूँ, वैसे मैं यहाँ पे एंट्री डाल देती हूँ. करेक्ट? डिड यू अंडरस्टैंड? बट मैडम, आज तो बहुत सा काम था मेरे को बिजनेस पे. मैं ही जाके उस चेक को डिपॉजिट करना था बैंक में, बट ड्यू टू सो मच ऑफ वर्क आई डिड नॉट गो. आई वेंट टुमारो. टुमारो, फ्रॉम टुमारो स्टार्टिंग 2 to 3 days, Dasara holidays, madam. So what will happen? Bank is on leave. करेक्ट? यस. सो टिल दैट टाइम मैंने एंट्री बना लिया है मेरा कैश बुक पे. बट मेरा पासबुक पे, यस, मेरा पासबुक पे डू वी हैव दैट पर्टिकुलर एंट्री स्टिल मेड? नो, बिकॉज मैंने चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया है मैडम. नाउ आई एम डिपॉजिटिंग इट टुडे. कुछ भी काम है, आई एम टेकिंग 5 minutes, आई एम गोइंग. ओके, सो कमिंग बैक, आई एम गोइंग टू गो एंड डिपॉजिट द चेक देयर. Now, after depositing the check, बैंक कुछ टाइम लेगा फॉर क्लियरिंग इट. क्लियरिंग का मीनिंग क्या है? आप जब कुछ बैंक का चेक रिसीव करते हो, सो लेट मी से मेरा बिजनेस अकाउंट है इंडियन बैंक पे. चेक रिसीव हुआ है, मेरा कस्टमर का बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है. तो उसने एक चेक दिया है मेरे को. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग द आईसीआईसीआई बैंक चेक एंड गिविंग इट टू माय इंडियन बैंक ब्रांच. तो इंडियन बैंक सारे के सारे ब्रांचेस का एक क्लियरिंग हाउस होता है. तो उस क्लियरिंग हाउस में उस चेक जाता है एंड दैट क्लियरिंग हाउस विल कांटेक्ट द क्लियरिंग हाउस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. तो आईसीआईसीआई बैंक का भी कुछ क्लियरिंग हाउस होता है ना. तो क्लियरिंग हाउसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस विल हैपन. उस ट्रांजैक्शंस में इंडियन बैंक का जो प्रेजेंट हुआ है वो चेक आईसीआईसीआई बैंक में वो कस्टमर के अकाउंट में जाके बैलेंस है या नहीं है उसको चेक करते हैं फर्स्ट. सो बैलेंस है, सिग्नेचर्स मैच हो रहा है, तो तभी उसके अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्लियरिंग हाउस. ठीक है? तो इस टाइम का क्लियरिंग, ओके, इस टाइम का क्लियरिंग करने के लिए देर विल बी सम टाइम टेकन. उसी को हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस. चेक व्हेन इट इज डिपॉजिटेड, ऑलवेज रिमेंबर माय स्टूडेंट्स, चेक डिपॉजिटेड का मीनिंग है आपने कैश बुक में पहले ही एंट्री कर दिया है. मेरे को रिसीव हुआ है चेक, आई एम पुटिंग इट हियर. ओके, बट पासबुक में स्टिल अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है क्योंकि वो क्लियरिंग डिफरेंस में स्टिल देयर. तो इसी के वजह से मेरा टाइमिंग डिफरेंस आ सकता है. माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग और इफेक्ट क्या होता है? व्हेनेवर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का इफेक्ट है, हमारे पास दो बुक है, कैश बुक है, पासबुक है. करेक्ट? तो तब मैं चेक डिपॉजिटेड का एंट्री डेबिट साइड में लिखती हूँ, मेरा कैश बुक बढ़ जाता है. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर वॉट एवर डिफरेंसेस आई एम गोइंग टू टीच यू. आपका माइंड में लॉजिक को समझने के बाद आप रिजल्ट में आना है. वॉट इज द रिजल्ट? Okay, Rahul, I will explain it in English also, so I understand you're from South India. So coming back to the point, whenever I am going to explain about the differences, okay, whenever I'm going to explain about the differences, the major part is that you people have to understand the basics of what is this particular difference, and uske baad the final thing should be, due to this difference, cash book is more or passbook is more.
ये वाला बात आपको रिजल्ट में आना चाहिए. ओके, सो व्हेन आई से चेक इज डिपॉजिटेड, उसका मीनिंग है इमीडिएटली आप कैश बुक में डेबिट करते हो. यू विल इमीडिएटली डेबिट योर कैश बुक, सो योर कैश बुक विल बी मोर. पासबुक टू दैट एक्सटेंट, अभी तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, अकाउंट में देर इज नो क्रेडिट स्टिल. So due to this timing difference, you are going to tell that cash book is more, passbook is less. So this is the first difference. Did you all understand? Check deposited but not cleared. Okay, check deposited but not cleared means the cash book is more. Why, madam? The moment you receive the check, you will make an entry in your cash book, so that is why it is more. And passbook is less to that extent. Did you understand? There's somebody who's disturbing the class. Ashok, you're there? Just remove this person from the class. No, he has no interest of soliciting and listening. Okay. Yeah, issue. There is one person. Okay. He's there with this symbol. Okay. There's no name for that person. Please remove. Okay. Did you all? वो symbol आपको मिल गया? Don't raise your hands now. Now I will not take any of your doubts. I will take your doubts a little later. Okay. Explain fully in English if even I want to do, but this is a mix of a class, okay? So don't worry, I will do it both the ways. This one, did you all understand? The first one, check deposited, the meaning or the result of check आप जब deposit करते हो but not cleared, इसका meaning है जब आप check को receive करते हो, when you are receiving the check and you are putting it into the bank, you will make an entry in the cash book. तो cash book you will debit the cash book because receipt है, you will debit it. So the moment you debit it, cash book balance will increase. And to that extent, passbook balance will be less. Okay. So now here, cash book balance will be more, passbook balance will be less. Did you understand the first concept? Now the second concept. चेक इश्यू हुआ है बट प्रेजेंट नहीं किया है. दैट मीन्स हम जब डेटार से चेक को रिसीव करते हैं, like we receive the amount or the check from the debtors, we also have to pay to our creditors. हमारा expenses हुआ है, we have to pay for the expenses. So all of this, when the business gives or makes a payment, we tell that as check issued. But when we issue the check, there also clearing process will come into the picture, no? But when we issue the check, immediately we write, we issued the check to X 200 rupees. That means I am crediting my cash book immediately. That means cash book balance will be less. Because जब मैं क्रेडिट करती हूँ कैश बुक पे, उसका मीनिंग है कैश बुक कम हो रहा है. मैं चेक इश्यू कर रही हूँ, तो इट मीन्स दैट ऑलरेडी मैंने पेमेंट किया है. हिसाब से किस बुक से हिसाब से, कैश बुक में ऑलरेडी उसका मीनिंग है मिस्टर एक्स को मैंने चेक दिया है, तो पेमेंट हो गया है. बट एक्चुअली इस चेक कब पेमेंट होता है? व्हेन द लूप गेट्स कंप्लीटेड. only when Mr. X goes to his bank and gives my check and the money gets debited from my account, तभी पासबुक में वो लूप क्लोज होता है. until then, उस समय तक which book will be more, which book will be less? मैडम, कैश बुक में आपने एंट्री किया है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, बट बैंक पासबुक का आपका अकाउंट अभी तक डेबिट नहीं हुआ है मैडम, तो पासबुक बैलेंस इज मोर. दैट्स ऑल. सो द सेकेंड थिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड, चेक आप जब इश्यू करते हैं कैश बुक इमीडिएटली रिड्यूस हो जाता है, बट पासबुक में बैलेंस स्टिल अभी भी इट विल बी मोर ओनली बिकॉज मैडम उसने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया है मैडम, तो मेरा बैलेंस इट इज नॉट गॉन देयर. इज दिस क्लियर? दिस इज द बेसिक. ओके. Okay, Ritik, I will use tab. Okay. Whenever I use tab, it becomes difficult for us to write. Always your board will be there. It's the basic thing and a good thing. Right? Anything that you're not able to follow here, you just let me know.
but I am very comfortable in teaching this way. I think you will also be able to understand. Okay. Okay. Okay, sure. I will do it that. So now coming back to the differences. So the first difference, are you okay? Everybody, class, I want everybody to of you to answer. So timing differences में two types का timing differences है. Check deposited but not cleared. Check issued but not presented. Check deposited, the meaning is when you receive the check. आप जब check को receive करते हो, पहला entry cash book में आ जाता है. So that means that cash book balance बढ़ जाता है. But बैंक में जब तक वो प्रेजेंट नहीं किया जाता है, आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं आता है. सो टिल दैट टाइम कैश बुक इज मोर एंड पासबुक इज लेस. ओके. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मीनिंग है बिजनेस इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द चेक. सो व्हेन इट इज मेकिंग अ पेमेंट, कैश बुक का बैलेंस विल गेट रिड्यूस्ड. बट बैंक पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं आया है मैडम, so it is not getting debited. Good, everybody has understood. Now we are going to talk about the second heading, transactions done by the bank. इसका मतलब है, the meaning of this is bank is doing the transactions by itself, but the business does not know about it. ये कैसा हो सकता है मैडम? कैन वी हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? यस यू कैन हैव. माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो सकता है. तब वो क्रेडिट होता है व्हेन द इंटरेस्ट गेट्स क्रेडिटेड. बैंक क्या आपको कॉल करके बोलता है नो, योर अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स क्रेडिटेड. तो यू कैन आस्क मी, मैडम जस्ट नाउ दीज डेज एवरीथिंग वी गेट अ मैसेज. नो मैडम, इन द ओल्डन डेज देयर वाज नो मैसेजेस. सो बैंक स्टेटमेंट जब तक आप मंथ एंड में आप बैंक में जाके उसको प्रिंट करके यानी पासबुक में एंट्रीज को डाल के व्हेन यू गेट इट बैक, only then the business used to understand, oh, interest is credited, my god, interest has been debited. Got the point? So these are the transactions that is done by the bank directly without informing to the business, like interest credited. इंटरेस्ट क्रेडिट होने से यू टेल मी, पासबुक विल बी मोर और योर कैश बुक विल बी मोर. इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आपके बैंक अकाउंट पे, तो नाउ यू टेल मी विच बुक विल बी मोर. बिकॉज मैंने आपको क्लियरली बोला है कि वॉट एवर आर द ट्रांजैक्शंस और द डिफरेंसेस, आई टोल्ड यू क्लियरली दैट you should tell me finally which book is more. Only two people have answered. Mystika, Radhika, correct. Kundan, correct. Ritik, correct. Mystica, you have made a mistake. Cash book will not be more because cash book में entry ही नहीं आया है. When you get the interest, your bank account will increase. So the meaning is passbook will be more. When I say passbook is more, to that extent your cash book will be less because इस entry receipt entry आप अभी तक cash book में नहीं किया है, तो passbook में ही reflect हो रहा है. Passbook is more, cash book is less. Is this clear to everybody? अभी जब interest debit होता है आपके account से, you now tell me, interest debited from your account, which book will be more? Now you tell me. Okay, you tell me, if interest is debited, which book will be more? Your, very good. Or I can say passbook is less because amount has been taken back, and your cash book to that extent will be more. Passbook will be less, cash book will be more. Perfect. This is the first transaction. Madam, come to the second transaction, madam. Second transaction, I am giving a स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. मैं बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, उसको मैं बोलती हूँ मैंडेट. ईसीएस मैंडेट बोलते हैं. लाइक आप एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हो, यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, लोन का ईएमआई और paying. That means you tell the bank, you give a ECS mandate directing the bank. तब फिफ्थ आता है, सेवेंथ आता है, टेंथ आता है, आप एक टाइम लिमिट एक डेट से बोलते हो इतना अमाउंट एवरी मंथ ऑन द सेम डे शुड बी डेबिटेड. उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना. किसको? बैंक को. क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? स्टैंडिंग इंटरेस्ट के वजह से व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? इट मीन्स दैट
I am giving the money directly from my account. Payment is going every month on that date. I set a auto debit. करेक्ट. तो इसका क्या मतलब है नजीम? वेरी गुड. इसका मतलब है जब पेमेंट हो जाता है, पासबुक विल बिकम लेस एंड कैश बुक टू दैट एक्सटेंट विल बी मोर. Passbook will become less, cash book will be more. Rahul, please, Rahul, I understand you're from Tamil medium. பரவாயில்ல, no problem. தமிழ்ல டீச் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக ஐ வில் டீச் பார்ஷலி இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் இன் ஹிந்தி ஆல்சோ. ஓகே, யூ டோன்ட் வரி. ஆப் ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண கிளாஸ்ல. ஓகே, தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So coming here, passbook is less and cash book is more. Very good. The next one is very important. Madam, customer is directly depositing the amount in my bank account, madam. So direct deposit by customer. Deposit by customer in the bank account. What is this? Direct deposit in into your bank account. Or else I can also say मेरे कुछ इंटरेस्ट आना है, डिविडेंड्स आना है, तो ये दोनों भी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है. ओके, सो इफ आई से डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑल्सो कम्स डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट. क्या है? डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल जा रहा है. बोथ ऑफ देम हैव द सेम इफेक्ट. आपका कुछ अमाउंट क्रेडिट हो रहा है. The meaning, whenever you get an amount that is credited, your passbook balance will be more. Immediately it will record, no, bank balance will increase, no, so passbook balance will be more. To that extent, your cash book balance will be less. To that extent, your cash book balance will be less. Clear, everybody? And then finally, the third category is errors. Errors ka kuch standard form ka errors, like what we have studied in these two, there are no formats. But okay, so Gurvinder, for you I'm repeating, all of you please listen this particular point. Whenever a customer, जब वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर देता है, नहीं तो आप कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड्स आ रहा है. ओके, और नहीं तो कुछ आप रेंटल प्रॉपर्टीज है, आपने उसको रेंट में दिया है, द रेंट इज बीइंग रिसीव्ड. सो ये सब जब आपका अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट. तो इसका इफेक्ट होता है वेरी क्लियरली, पासबुक विल बी मोर, कैश बुक विल बी लेस. दैट्स ऑल. दैट इज द मीनिंग. एंड एरर्स का ये वाला मीनिंग होता है कि जब कुछ एरर हुआ है, एरर्स कैन हैपन ईदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक. हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं कैश बुक में एंट्री करने के टाइम पे. वी कैन मेक मिस्टेक्स व्हेन वी आर डूइंग एनी एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक, और द बैंक पीपल कैन मेक अ मिस्टेक. वॉट एवर इट इज, एरर, ड्यू टू द एरर, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, आपको उस एरर के वजह से कौन सा बुक ज्यादा है कौन सा बुक कम है, उसको that time only you can understand. So now if you ask me, madam, is there anything that you have to do or learn? No, errors will be different. So when we read the question, we will understand it. But there is one classification that it is errors are there. Clear, everybody? Is this okay till now? So first thing we have learnt about the balances. Debit balance of the cash book should be equal to the credit balance of the passbook. Point 1. Credit balance of the cash book should be equal to the debit balance of the passbook. Okay. So the first one is called favorable balance. The second one is called unfavorable balance. And the second step that we learned, हमने पढ़ाया किया है, what are the differences. Now we are going to see how are we going to solve the questions. Very, very easy, my dear students. But you people have to remember the steps. अभी तक प्लस माइनस मेथड में किया होगा आपका 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में, जो कुछ भी अकाउंट्स बैकग्राउंड से you people are coming, you would have done plus or minus method. Okay, that method you can do. But आप जब professional course में आते हो, you are supposed to understand the logic and do it in a professional way. That's all. So if you are going to follow my method, I would suggest you please follow my method. Try to understand this. So unlearn कौन सी कॉन्सेप्ट को आपने
आपने पहले ही पढ़ाई किया है उसको अनलर्न करके अभी इस कॉन्सेप्ट को प्लीज पुट इट इन योर हेड. द पॉइंट नंबर 1 इज आपका स्टार्टिंग पॉइंट. आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो यानी अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो. मैडम फेवरेबल एंड अनफेवरेबल का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फेवरेबल बैलेंस का मीनिंग है डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक. और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक. Favorable, unfavorable. Okay, madam. Starting point, I have understood, madam. The question says favorable balance, madam. तो अभी step number 2 में आना है. Fix your aim or target. उसका meaning क्या है, madam? Please listen very, very carefully. Please listen. If you are starting with favorable balance, आपका एम होता है ऑपोजिट बुक में. इफ यू स्टार्ट विथ अनफेवरेबल बैलेंस आपका एम होता है सेम बुक में. मीनिंग क्या है मैडम? प्लीज लिसन केयरफुली. इफ आई टेल favorable balance as per cash book is my starting point. All of you remember favorable balance as per cash book is my starting point. तो मेरा aim कैसा होना है? फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक. करेक्ट. तो मेरा एम होना है ऑपोजिट बुक विच इज द पासबुक. सपोज इफ आई से अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मैडम. तो किस में आपका टारगेट और एम होना है? सेम बुक में होना है जो होता है कैश बुक. So the starting point, very, very important. Favorable balance as per cash book is given to you. That is the starting point. So the aim will be favorable balance means aim will be in the opposite book. Suppose starting point is unfavorable balance as per cash book, then you will have it in the same book. Your aim will be in the same book, which is the cash book. मैडम एम फिक्स करने का क्या मतलब है मैडम? व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाई शुड वी डू दिस एम मैडम? बिकॉज फॉर द थर्ड स्टेप आपको मैंने वॉट एवर डिफरेंसेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. करेक्ट. मैंने जो कुछ भी डिफरेंसेस आपको 10 मिनट्स के पहले एक्सप्लेन किया है, मैंने बोला है इस डिफरेंस के वजह से कैश बुक ज्यादा है, इस डिफरेंस के वजह से पासबुक ज्यादा है. आई टोल्ड यू नो. That is why now it is important. Why it is important? Based on the aim book. आप जब aim और target को fix करते हो, aim target fix करने के बाद जब aim book increase होता है उसको add कर दो. That means if passbook increases, that particular transaction के वजह से passbook increase हो रहा है, आपका aim passbook में है, तो तब उसको add कर दो. और if ड्यू टू द ट्रांजैक्शन वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको सबट्रैक्ट कर दो. मैडम इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी तो मैंने बोला है, आई हैव गिवन यू द डिफरेंसेस. उसके बिना और मोर देन दैट देयर विल बी नो डिफरेंसेस कमिंग टू यू इन द एग्जाम. ओके. तो उस डिफरेंसेस को यू शुड अंडरस्टैंड. उस डिफरेंसेस के वजह से ओके सो उस डिफरेंस के वजह से व्हाट विल हैपन इज you should understand which book is more, which book is less. Okay. Then you are supposed to fix the aim. Based on the aim, you are supposed to do the question. As simple as this. Clear? But when we start doing, then you will understand. Clear, everybody? Now we are going to go ahead with the illustration number 2. I am sharing my screen. All of you, please see. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited. Okay? You have a format. Everybody please see. Accounts में presentation और format बहुत बहुत important है. So now coming back in the books of Jindal Limited. Bank reconciliation statement as it. आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. ओके. एज एट अ पर्टिकुलर डेट. महक, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी. मैं जब
इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ आपको you will understand that particular concept. That is why I have started doing the question. Clear, everybody? So now the first point we are going to see. Okay? First point पे अभी देखो. Balance as per cash book is given to you. कितना है? 2,40,000. The starting point is balance as per cash book. कितना है? How much is it? 2,40,000. Now come to the steps. Madam, starting point, madam. Now, madam, just balance is given to me, madam. तो balance क्या होता है, madam? I don't know if it is debit balance or credit balance. That in the question clearly नहीं दिया है. तो सिर्फ the word balance is given. It means that it is favorable balance. If it is unfavorable balance, they will give you directly, clearly. ऐसा कुछ balance से they will not tell you. If the word only balance is given, it means that it is a favorable balance. All of you please understand point number 1. मैडम आपने favorable balance को debit balance as per cash book बताया है. बट यहाँ पे डेबिट बैलेंस का कुछ रेफरेंस नहीं है. Only the word balance is given. My dear students, if only the word balance is given, it means favorable balance. All of you with me? Okay. So the step 1 is we fix that this question starting point क्या है? Favorable balance है. तो step number 2 क्या करना है हमको? Aim और target को fix करना है. कौन सा वाला? ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. मैं जब फेवरेबल बैलेंस स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को, व्हेन आई स्टार्ट द क्वेश्चन विथ फेवरेबल बैलेंस, the aim or the target becomes in the opposite book. I start with favorable balance as per cash book. My aim will be passbook. What is this? I am doing step number 2. क्यों मैडम पासबुक लिया है? बिकॉज आई हैव गिवन यू थंब रूल. आप जब फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, ऑपोजिट बुक में आपका एम होता है. ऑपोजिट बुक का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, मेरा ऑपोजिट बुक होता है पासबुक. इज दिस क्लियर? महक whoever has asked me. अभी आपने टारगेट को फिक्स किया है. नाउ when we read the questions, हमारा हमारा कंसंट्रेशन होना है इस ट्रांजैक्शन के वजह से. ओके इस ट्रांजैक्शन के वजह से पासबुक इज मोर और पासबुक इज लेस. इफ पासबुक इज मोर, add. If passbook is less, subtract. That's all. Simple. आप जब फिक्स करते हो एम और टारगेट को, उसके बाद doing that becomes very very easy. Now let me show you the question. Everybody please see the question. All of you please see. Check issued but not presented 1,36,000. The meaning of check issued but not presented, where will it come? टाइमिंग डिफरेंस में आता है. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मीनिंग क्या है? मैं जब चेक इश्यू करती हूं, what will I do? I will make an entry in the cash book. That means check issue means चेक का पेमेंट करना. तो चेक इश्यूड का इफेक्ट है कैश बुक कम हो जाता है. बट बैंक पासबुक का मीनिंग क्या है? उसका बैलेंस कैसे होता है? चेक इश्यू किया है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक कम हो जाता है. टू दैट एक्सटेंट पासबुक विल बी मोर. नाउ पासबुक इज योर एम, सो यू आर सपोज टू एड. You are supposed to add checks issued but not presented for payment. Full line लिखना है. You have to write the full line. ओके दिस इज द फॉर्मेट. हेडिंग लिखना है, डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम का अमाउंट आता है, आउटर कॉलम का अमाउंट आता है, सभी लिखना है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू आंसर. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड the balance, how we are arriving? The first step, if the word only balance is given, it is favorable.
फेवरेबल से हम स्टार्ट करने से हमारा एम होता है ऑपोजिट बुक में, सो दैट इज वाई कैश बुक मीन्स पासबुक विल बी द एम। आप एम और टारगेट को फिक्स करने के बाद एम बुक जैसे मूव होता है वैसा ही उसको ऐड और लेस करना है। जब एम बुक इंक्रीज होता है ऐड करो, जब एम बुक डिक्रीज होता है उसको सबट्रैक्ट करो, सिंपल। ओके, नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट। Okay, come to the next point or the next question. Next thing, check deposited but not cleared. ये होता है opposite. Check deposited but not cleared. तब मैं चेक को रिसीव करती हूं, मैं कैश बुक में एंट्री करती हूं डेबिट साइड पे, बट बैंक पे स्टिल डिड यू गेट दैट मनी? नो। सो टिल दैट टाइम चेक डिपॉजिटेड का इफेक्ट क्या है? कैश बुक विल बी मोर बिकॉज आई हैव मेड एन एंट्री, बैंक पासबुक में स्टिल अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक पासबुक विल बी लेस। नाउ योर एम इज इन द पासबुक, ड्यू टू दिस एंट्री चेक डिपॉजिटेड पासबुक इज लेस, सो प्लीज सबट्रैक्ट इट। चेक्स डिपॉजिटेड but not cleared, 90,000 we have to subtract. Understood everybody? Check issued, check deposited, very simple. Check issued का एक ही effect है, cash book less, passbook more. Check deposited का cash book more, passbook less. But whether you should add or subtract depends upon the aim. तो इस एम को हम कैसे फिक्स करते हैं? स्टार्टिंग सेंटेंस को पढ़ के फेवरेबल या अनफेवरेबल को डिसाइड करने के बाद इस रूल को माइंड में रख के एम को फिक्स करना पड़ेगा। इफ यू आर फिक्सिंग द एम करेक्टली, योर क्वेश्चन इज करेक्ट। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। ओके एवरीबडी, now please see the next one. Bank charges amounted to 300. तो ये adjustment का meaning है transactions done at the bank which you don't know. So bank जब interest और charges को debit करता है, what happens to your passbook balance? The bank charges of 300 it will reduce. तो bank charges 300, when it is debited from your account, your passbook balance decreases. So you will subtract it. Okay. Now the next and the last point, my dear students, everybody please see here. Interest credited by the bank का meaning है जब आप interest को लेते हो, it means that your passbook balance will be added. So interest credited 1,250. तो मैं ऐड कर रही हूं। सी द लास्ट पॉइंट इज द बैलेंस एज पर पासबुक बैलेंस इज गिवन हियर। माय डियर स्टूडेंट्स, सो 1,37,250 को ऐड करो, 90,300 को सबट्रैक्ट करो। कैन समबडी टेल मी द आंसर? कैन समबडी टेल मी द आंसर, whoever has done it? Or please do it now. Use your calculators, no scientific calculators, normal calculators. So here it will be 2,86,950. Everybody, very good. My dear students, after getting the answer, writing the final sentence will give you half a mark. Very, very important, madam. मैंने स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक से, मैंने ऐड किया है, सप्रा किया है, ऐड किया है, सप्रा किया है, फाइनली I have to see whether this answer is positive or negative. If it is positive, the favorable balance will be still favorable balance only. As per, if I start with cash book, I will end with the opposite book only. My dear students, ये वाला एम का बात अलग है, दिस इज डिफरेंट। आप क्वेश्चन को पूरे करने के बाद जब लास्ट सेंटेंस को लिखना है, उसके लिए जस्ट रिमेंबर, इफ यू स्टार्ट विथ कैश बुक, आंसर विल एंड विथ पासबुक. Okay, if you start with passbook, the answer will be coming with cash book. But madam, favorable balance will remain favorable balance only because here answer is positive. That means madam, there can be answer in negative also. Yes, when you get this answer in negative, no problem, don't worry, change the balance into the opposite balance. If here you started with favorable balance and you get a negative answer, favorable बदल जाता है unfavorable balance पे. Okay,
यानी आप स्टार्ट करते हो अनफेवरेबल बैलेंस से, आंसर नेगेटिव आने से अनफेवरेबल बन जाता है फेवरेबल. दैट इज द मीनिंग. डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? Everybody, I want everybody of you to answer in the chat box. Now answer. Don't keep talking something. Now, did you all understand this particular question number two, the most easiest question? I have started. The steps are very easy. Okay. 4 step only. BRS करने के लिए आपको 4 steps ही memorize करना है. 4 steps ही. Okay. 4 steps itself you can finish the question. पहला वाला first step is the starting point favorable यानी unfavorable को decide कर लो. Decide करने के बाद step number 2 target यानी aim book को fix कर लो. फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करने से ऑपोजिट बुक में, ओके, ऑपोजिट बुक में आपका एम होना है. अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करने से सेम बुक में आपका आपका एम और टारगेट होता है. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ एम और टारगेट फिक्स करने का क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज मैडम? How the aim book behaves. If it increases, add. If it decreases, subtract. Simple. And the final thing, somebody asked me, Madam, the final answer not understood. Final answer for now, you people understand. If you start with balance as per cash book, आपको लिखना है last में balance as per passbook. So, cash book से change करते हो. हाँ, that is what, no? Mahak, everybody please understand. So, Mahak is asking me, Madam, आपने start किया है cash book से. Why are you writing passbook at the end? Mahak, because इन दोनों बुक्स के बीच डिफरेंसेस है. मैं इन दोनों को इक्वल करना है ना. So that is why I start from cash book. I understand ये सभी मेरा डिफरेंसेस है. इसको ऐड करके सबट्रैक्ट करके मैं पासबुक में इतना बैलेंस दिया है. तो इसके लिए मैं रिकंसिलिएशन किया है. So the point is, the meaning is I have done the reconciliation. इसको ऐड करके सबट्रैक्ट करने के बाद मेरे को आया है 2,86,950. वो बैलेंस है पासबुक में. तो 2,40,000 था कैश बुक में, 2,86,950 है पासबुक में. इन दोनों के बीच इतनी ट्रांजैक्शंस के वजह से डिफरेंसेस आया है. तो इस ट्रांजैक्शंस को मैं ऐड सबट्रैक्ट करके कैश बुक बैलेंस से मैं पासबुक बैलेंस में पहुंच गया. Okay? Clear? Now we go ahead with the what is the doubt? Just a minute. Somebody, a girl now asked the doubt. Just give me 2 minutes. Let me see the doubts. I'm sorry. Who was the last person who asked me? I don't get that name. Aisha Zahir. Ma'am, if cash at bank is an asset, why is the favorable balance in the credit side? Where is credit यहाँ पे? कहाँ है? Where did I write it as credit, ma? There is no credit or debit. This is just amount column. That's all. यहाँ पे just favorable balance I have written. Clear everybody? Very, very simple. Mahak, you understood? Raj understood. Okay. Sejal, I am not taking any of your hands right now. Let me finish 2 to 3 other questions and then. Bindya Bino. Khalid. Okay. Alisha Begum. Good. Radhika Jain. Did you understand? Vaishnavi Shah. Okay. If you are all able to understand, no problem. Now, please go ahead and do illustration number 3 by the time I'm going to take. Tia. Thanks, Tia. Crystal clear. Ujjwal Goyal. Okay, good. Please go ahead. Whoever has finished, please go with the. Okay, Ritik Kumar, I am happy that you people are understanding. This is very easy. Okay. Kundan, why, what is happening? Why is the last answer not coming for you? Last में कौन सा doubt है? आप जब एक बुक से स्टार्ट करते हो, you will go to the other book, no? कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो पासबुक. ओके. तनुगिरी, ओके, गुड. राज, all of you start doing illustration number 3. फटाफट. अत्यंत, good. If you have all cleared, no doubts, please go to the next question. Don't wait for me.
Rahul has a problem. Explain in English. I'm doing it both the ways. Okay. Gaganjot Kaur. Passbook is more. Okay. Shivangi Srivatsav. Okay, done. We will be taking very less breaks in my class because I want to finish everything. So that will be my problem. That will be the only problem that you will have with me. I will try to finish as much as questions possible in the class. Okay. अभी हम देखेंगे question number illustration number 3. Very very simple illustration. सभी देखो. On 31st March bank passbook of Namrata. तो अभी हम क्या करेंगे? We will start with the passbook balance. Question number illustration 2 में we started with the कैश बुक बैलेंस. अभी हम स्टार्ट करते हैं पासबुक बैलेंस से. ओके. सो वी आर गोइंग टू टेक द नम्रता's पासबुक बैलेंस शोड 1,50,000 टू हर क्रेडिट. इसका मतलब क्या है? पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक मींस फेवरेबल बैलेंस. यहां पे दिया गया है इन द बुक्स ऑफ नम्रता as at 31st March 2022. The favorable balance as per passbook. यहाँ पे पासबुक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. What is it? 1,50,000. अभी you people tell me where should the aim be? Madam, favorable balance as per passbook is the starting point, madam. Favorable balance तो मेरा aim होना है opposite book में. कौन सा book यहाँ पे है? पासबुक है मैडम. व्हाट इज द ऑपोजिट बुक मैडम? कैश बुक. दोनों ही बुक है. पासबुक होने से ऑपोजिट बुक विल बी कैश बुक. कैश बुक देने से ऑपोजिट बुक विल बी पासबुक. दैट्स ऑल. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हाउ डिड आई फिक्स द एम? Everybody okay? Now, based on this particular aim, I am going to see if cash book is more, add. If cash book is less, subtract. That's all. Simple. हम जाएंगे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ओके. तो आई विल राइट एड, आई विल राइट लेस. आई विल राइट एड, आई विल राइट लेस. एक एक करके हम अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से. वेन यू रीड द क्वेश्चन करेक्टली, बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया है, वो आपके आंसर को चेक करने के लिए. नो प्रॉब्लम. She has issued checks amounting to 80,000, out of which only 32,000 were presented for payment. तो चेक इश्यू हुआ है, उसमें कुछ प्रेजेंट भी हो गया है. बट हमारा क्या चाहिए? टाइमिंग डिफरेंस किसके वजह से आता है? वाई विल वी गेट अ टाइमिंग डिफरेंस? चेक्स आर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. करेक्ट. तो यहां पे इस ऑब्जर्वेशन, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक और छोटा सा ग्लिच है. दैट वी विल डू. बट नाउ फर्स्ट यू टेल मी. ओके. सो फर्स्ट यू टेल मी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. Which book will be more? Which book will be less? When you issue the checks immediately, you will make an entry in the cash book. Check issued for payment. It is a payment. So cash book will be less. Passbook will be more. Okay. Now my aim is in the cash book. So checks issued बट नॉट प्रेजेंटेड, ये वाला चाहिए. टोटल चेक्स इश्यू हुआ है 80,000, आउट ऑफ विच 32,000 का प्रेजेंटेशन हो गया है, पेमेंट हो गया है. बट माई प्रॉब्लम इज ओनली विद द रिमेनिंग amount of 48,000 which is not yet presented. Madam, why are you subtracting? क्यों मैडम आप subtract कर रहे हो? My dear students, listen very carefully. Total checks issued are 80,000, but out of which 32,000 का payment हो गया है. Present करके आपने उस सप्लायर और क्रेडिटर ने पेमेंट ले लिया है, तो उसके वजह से आपका कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना. सो द मीनिंग इज यू वुड हैव मेड एन एंट्री ऑफ 32,000 इन योर कैश बुक. पासबुक में भी वो 32,000 रिफ्लेक्ट हो गया है, बट अनप्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स का डिफरेंस आता है, तो वो है 48,000.
Everybody, did you all understand? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड का सेम इफेक्ट है कि चेक का इश्यू हो गया है बट स्टिल प्रेजेंट नहीं हुआ है. ओके, स्टिल प्रेजेंट नहीं हुआ है. तो हमको चाहिए टोटल में कितना नहीं प्रेजेंटेड है. हाउ टू फाइंड आउट द अनप्रेजेंटेड चेक्स इन द टोटल? वॉट एवर इज प्रेजेंटेड, रिमूव दैट. सो चेक इश्यूड मीन्स योर कैश बुक विल बी लेस, passbook will be more. So my aim is in the cash book, so I am going to subtract it. Please read the second question. She received a check of 5,000, which she recorded in the cash book, but forgot to deposit in the bank. The moment you receive a check, the meaning is check received, but not deposited into the bank. When you receive a check, आप कहाँ पे एंट्री डालते हो? फर्स्ट कैश बुक में एंट्री बन जाता है. व्हेन यू रिसीव, कैश बुक इंक्रीजेस बट पास बुक इज लेस. कैश बुक इज मोर. योर एम इज इन द कैश बुक, सो एड चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड. वो भी, इसका मीनिंग भी 5,000 rupees you are going to add. I received the check, so my cash book balance will increase automatically immediately. Next point, everybody please see the next point, which is a check of 22,000 deposited by her has not been cleared. इसका meaning है check deposited but not cleared. Check deposited means immediately in the cash book you will make an entry. Check receive हुआ है, cash book बढ़ जाता है, but still not yet deposited or cleared का meaning है बैंक में गया है, but the process is not yet completed. So till that time your cash book will be more. So add it. Check deposited but not cleared. ये दोनों का एक ही इफेक्ट है. आप चेक रिसीव करने के बाद बैंक में इफ यू आर नॉट पुटिंग ऑल्सो सेम इफेक्ट, or you received the check and you put it in the bank but not yet cleared, that also same effect. So in these two cases your cash book will be more, aim is in the cash book, so add them. चेक इश्यूड करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो since your aim is in the cash book, subtract it. The last transactions, all of you please see. Very important last transaction. Mr. Gupta deposited an amount in her bank 15,700, not recorded in the cash book. So direct deposit by a customer. क्या हुआ है? Mr. Gupta has directly deposited 15,700 into her bank account. इसके वजह से बैंक पासबुक विल बी मोर, कैश बुक विल बी लेस. तो यहां पे डायरेक्ट डेपोजिट बाय गुप्ता 15,700, you should subtract it. Okay, 15,700, you should subtract it. Okay, I will again re-explain, Nancy, you please wait, let me finish the question, I will again do it. Okay, now the next entry, everybody, the next entry, please see. Bank credit and interest of 1,500, charges 250. So bank credit the interest means your passbook will be more, cash book will be less. So here it will be interest credited, which is 1,250. 1,250. And bank charges debited will be 250. Why मैडम you're adding bank charges? आप जब बैंक चार्जेस लेते हैं बैंक पासबुक में इमीडिएटली इफेक्ट आ जाता है. बैंक पासबुक reduces, cash book will be more. Since aim is in the cash book, this you have to do. 27,250 को ऐड करो और here it will be 700, 3,163, 63, 700, 64, 950 को subtract करो. See what is the answer. Can somebody tell me what is the answer? Oh, 1,500. I'm sorry. 1,500. Okay. I wrote 1,250. I'll add 250. So 65, 150. What is the answer here? 63,
700 plus 1500 will be 002. 65 200 यहाँ पे. Okay. What is the final answer? The final answer is 1,12,050. It is positive. 1,12,050. Is this clear? Now, madam, what is the last line that I have to write, madam? You started with favorable balance as per passbook. So, abhi, last answer you will get what? Favorable balance as per cash book. If you start from passbook, the answer will be cash book. If you start from cash book, answer should be passbook. Madam, still favorable balance only because answer is positive. That is why still the same balance. So Nancy was asking me about one point. Nancy asked me, ये वाला first one को फिर से बता दो. Please explain again. My dear Nancy, when check is issued but not presented directly, if it is given in the question, you will take the amount. इसमें थोड़ा बहुत वो adjustment है. What is given? Total check issued 80,000 है, but total मत लो, क्योंकि इसमें कुछ clear हुआ है. Okay? Tia, I will explain the bank charges. Please wait. Okay? Yes, Ujjwal, you can do both the ways. Now coming back, Nancy, 80,000 is the complete checks issued, but उसमें से already clear हुआ है, present किया है 32,000. उसको मैं remove करने से जो present नहीं हुआ है, that will come and stand here. Clear? Now, my dear students, the last point, fifth point, everybody is asking me to explain. Fifth point में क्या है? Bank charges और interest है. Bank charges का meaning क्या है? Your account, bank account में से पैसा ले रहा है. So your passbook becomes less. When bank interest or bank charges are debited, उसका meaning है आपका passbook balance is less. When your passbook balance is less, cash book balance will be more. आपका aim है cash book में. तो बैंक चार्जेस जो कुछ भी डेबिट हो रहा है इसके वजह से यानी इसका रिजल्ट है कि कैश बुक इज मोर. एम इज इन द कैश बुक सो एडेड. इंटरेस्ट जब क्रेडिट होता है पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, कैश बुक का बैलेंस विल बी लेस. सिंस योर एम इज इन द कैश बुक यू आर सपोज टू subtract that because cash book is less. Clear everybody? I think I've answered everybody's questions. Yes? Okay, Tia. Anish, okay, just give me a 2 minute break, okay? But by that time, I will want you people to do this particular question illustration number 4. Here, all of you, please see. Bank overdraft as per cash book का meaning है कि unfavorable balance. बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है अनफेवरेबल बैलेंस. आई वांट यू पीपल टू स्टार्ट वर्किंग आउट अनफेवरेबल बैलेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट. आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट करेक्टली. मैं देखती हूँ. ओके, आई वांट यू पीपल टू स्टार्ट
Okay. So, what is the thing that is starting here? Everybody of you, did you try? All of you are trying. In the books of the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st of December. तो यहाँ पे दिया गया है A का name. So Mr. A, balance as on 31/12/2022. Okay, I'm just rubbing. मैं सभी को I'm just rubbing it. So I will now take this particular question. You should be able to do. It's very very easy. Okay, the starting point is bank overdraft as per cash book. इसका meaning है unfavorable balance as per cash book. Sorry. Now, okay, unfavorable balance as per cash book is the starting point. कितना है? 6,340. This is the starting point. So, my dear students, the steps very, very important. Everybody, my dear students, the steps are very, very important. When I start with unfavorable balance, it means that my aim should be in the same book. तो मैं start कर रही हूँ cash book से. My aim will remain in the cash book only. Why, madam? Because it is starting with unfavorable balance. The word is unfavorable. Bank overdraft का meaning है unfavorable. Overdraft, OD balance, unfavorable. Clear? So, unfavorable as per cash book. The moment I see it is unfavorable, मेरा aim same book में ही होना है. If I am starting or my starting point is in cash book, aim also same book which is cash book. तो अभी मीनिंग क्या है? जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस कैश बुक को बढ़ाता है उसको ऐड करो. वॉट एवर ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू इंक्रीज द कैश बुक, ऐड देम. वॉट एवर ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू डिक्रीज द कैश बुक, subtract them. Whatever transactions are going to decrease the cash book, subtract them. Is that clear? So I will be writing add, I will be writing subtract. Now, all of you, please see first one. Interest on overdraft for 6 months ending 160 entered in the passbook. इसका meaning क्या है? Simple meaning है interest debited from the account. अब जो कुछ overdraft है ना, overdraft का meaning है it is like a loan. आप बैंक से लोन लिया है उसके लिए इंटरेस्ट को पे करना है. तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 160 रुपीज अभी आपसे लिया है. So the meaning is bank has charged the interest. आप बोलो bank interest charge करने से what is the effect? When bank charges interest, it gets debited from your passbook or your bank balance. So passbook balance will be less. To that extent, cash book balance will be more. Your aim is in the cash book, so you are supposed to add interest on overdraft 160 rupees you are going to add. Why, madam? Because interest debited means passbook will reduce immediately, but cash book to that extent will be more only. So you will have interest on overdraft to be added. Cash book is the aim, so add it. Is this clear? Everybody did till this? Any doubts till this you people have? Everybody? ओवरड्राफ्ट पॉइंट इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है अनफेवरेबल बैलेंस. वेरी वेरी सिंपल. ओके, अनफेवरेबल बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एम हमको होनी चाहिए सेम बुक पे. ओके, एवरीबडी एल्स डिड यू अंडरस्टैंड? फॉर मी चेकिंग ईच एंड एवरी चैट इट्स टेकिंग टाइम. Inside. All of you. Okay, Gurpreet, he has solved the question and he has got the answer. Okay.
Yes, Alok. If the opposite book is given, it will come. Alisha, super. You have solved the question. Plus minus is also correct. No problem. Mr. Rahul, I can understand your concern. Please give me some time. You're getting too much excited. Okay, understood. Finished also. Good. Ma'am, only in interest point, not clear. Why, Tia? Interest point, you should be very, very clear. That is one of the easiest thing. When you are getting interest credit ka meaning your account is getting credited with that amount of interest, so passbook mein entry will be made immediately, so passbook balance will increase. But to that extent cash book mein entry kiya hai nahi na, so passbook will be more when interest gets credited in your account, cash book will be less. Now interest jab wo debit ho jata hai, the meaning is आपका account से money मैं लेती हूँ, so my passbook में entry मिल जाता है, so it will come down and this will increase. Is that clear? Yes, I will go ahead and do the question, but I wanted you people to understand. Gurvinder, good. Whoever has answered or solved the question, good. Whoever has not solved it, please learn it along with me. Clear, everybody? That is the first point. Now, point number two. All of you, please see. Bank charges of 400 are debited in the passbook. तो इसका meaning क्या है? Passbook में debit हुआ है तो passbook is reduced. Cash book to that extent is more. Aim है cash book में तो bank charges debited 400 will come in the add column. Why madam? Debit किया है, account से गया है पैसा. Passbook is reduced. Balance is gone down, but cash book to that extent it is not gone down and the amount is the same. Is this clear? Bank charges debited. And the next point is everybody please see, very very important. Check issued but not cashed. इसका meaning है check issued but not presented for payment. 11 lakh and 68,000. आप जब checks को issue करते हैं उसका result क्या है? Now you should understand. You should tell me fast. Check issued का effect is cash book is less, passbook is more. तो cash book में aim है, so subtract. Checks issued but not cashed. Okay. How much is the value? 11 lakh and 68,000 minus. Okay. Now, my dear students, please see the next point. Checks checks paid into the bank but not cleared. Madam, check paid का meaning क्या madam? Check paid means check issued. No. Check paid का meaning है check deposited. Check paid का meaning है checks are deposited but not cleared. Check deposit का क्या effect है? Cash book balance is more, passbook balance is less. Since aim is in the cash book, you should add the checks deposited but not cleared. कितना है checks deposited but not cleared? 22 lakh and 17,000. 22 lakh and 17,000. क्यों मैडम आपने ऐड किया है? चेक डिपॉजिट हुआ है. व्हेन आई डिपॉजिट द चेक इमीडिएटली कैश बुक बैलेंस विल इंक्रीज बिकॉज मैंने एंट्री किया है कैश बुक में. So my aim is in the cash book, so that will increase. And everybody else, last, interest on investments collected by the bank and credited directly. तो इसका मतलब है बैंक पासबुक में आपको कुछ इंटरेस्ट मिल गया है. तो that meaning is your passbook balance is more, but cash book में entry नहीं किया है, cash book is less. Since your aim is in the cash book, please subtract the interest on investments collected. That comes to 12 lakh rupees, correct? So 23 lakh 68,000 subtract, and here 22 lakh 17,560 add. Can somebody tell me what is the answer? Can somebody tell me what is the answer, everybody? You all finished? No. Tell me what is the answer. Huh. 1,44,100. But my dear students, you are not telling me if it is positive answer or negative answer. Here, the answer will be minus.
Negative, correct, madam. You should remember that also. So, if this is changing into negative, what will happen to my last sentence? Can somebody tell me the last sentence? I started with unfavorable balance and got a negative answer. So, now that balance will change into favorable balance as per cash book I started. I arrived at the passbook. Favorable balance as per the passbook. As simple as this. Nothing more, nothing less. Did you all understand? Yes? Any doubts, my dear students? Everybody got the answer? Okay, Ujjwal, good. No doubt. Okay, Anish. Others, I want everybody to answer. Okay, good. Everybody says they have understood. Very good, Tia, everybody. Now, all of you, please see the question number 7. Now, after illustration 4, 5, 6, they are with adjusted cash book, which we will be doing it tomorrow. Now, we are going to go with the illustration number 7. The same illustration, same thing. From the following information, prepare a bank reconciliation statement. Okay, prepare a bank reconciliation statement for New Steel Limited. The same thing again, unfavorable balance. I want everybody of you to start doing the question. New Steel Limited as at 31st December 2022. Here also overdraft as per cash book is the starting point. उसका meaning क्या है? Overdraft का meaning है unfavorable balance. तो अनफेवरेबल बैलेंस में स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपका एम सेम बुक में होना चाहिए. सो आई स्टार्ट विथ अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. माय एम आल्सो विल रिमाइन इन द कैश बुक. नाउ वेरी quickly I am going to do this question. Very easy question, nothing big. Okay, shall we start doing this question? I want everybody of you to try along with me. आपको पढ़ के you should understand. Okay, Suraj Sachdev, what is the basic logic between your aim? Whatever you did add and minus, no, in your earlier stages, a refined version, that's all. When I say aim, okay, it means that to solve the differences and to arrive at the other book ka balance, you are fixing the aim. So aim is generally to make your life easy. That's all. Sachdev. Suraj Sachdev. Good name. Nice name. Okay. All of you, please see here this particular transaction. Everybody. Interest debited by the bank, but no advice is received. You tell me what should you do? 2,78,700 is the interest debited by the bank. So should you add that or subtract that? You people tell me. Interest debited by the bank. Here the aim is in the cash book. Interest debited by the bank. What will you do? I want everybody of you to tell me. Interest debited by the bank. Good. Everybody is telling me correctly. Interest debited by the bank. Please add, madam. Interest debited by the bank because to the extent of this amount, how much is this? 2,78,700. 2,78,700 because when interest is debited, passbook is less, cash book to that extent is more. Very good, my dear students. Now please come here to the next point. Check issued but not yet presented. What is the meaning? Check issued, you should add or subtract. Aim cash book. Check issued, you should add or subtract. Check issued but not presented for payment. You have to. Radhika Jain, good. Mahak, good. Ronit, good. Shivangi, good. Alisha, no. Mystic, good. हाँ, check issued, Alisha. Check issue हो रहा है. Your cash book will be less. That is the basics, no. Check issued
but not presented for payment is 6 lakh rupees. I have to subtract it. Okay. Now please come to the next part or the next question, next transaction. Now, please see this very, very important, very simple. Transport subsidy received from the state government directly by the bank but not advised to the company. 14 lakh and 25,000. इसका meaning क्या है? The company का कुछ help, financial support government is giving us. That means the amount of the subsidy हमारा account में directly is being received. My dear students, transport subsidy directly given by the government. It is going directly into the bank account. Mahak, no. Bank account में government is crediting the money. तो आपका passbook balance बढ़ जाएगा. पासबुक बैलेंस विल इंक्रीज बट कैश बुक में आपने एंट्री किया है एडवाइस नहीं किया. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एडवाइस इज नॉट रिसीव्ड. एडवाइस हम कंपनी को नहीं मिला है. तो ओनली द बैंक बैलेंस पासबुक बैलेंस इज मोर, कैश बुक बैलेंस इज लेस. तो aim is in the cash book balance is less. So transport subsidy जो कुछ भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल जाता है, दैट विल कम हियर. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. क्यों मैडम सब्ट्रैक्ट? बिकॉज ये वाला आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हुआ है. तो बैंक पासबुक बढ़ जाता है. टू दैट एक्सटेंट कैश बुक विल बी लेस. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, डिड यू अंडरस्टैंड? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का मीनिंग है कि डायरेक्टली अमाउंट इज गेटिंग क्रेडिटेड इन योर बैंक. इसके वजह से बैंक पासबुक विल बी मोर, कैश बुक विल बी लेस. गुरविंदर, यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? महक, नाउ यू अंडरस्टूड? उसको ऐड नहीं करना है. बैंक पासबुक विल बी मोर. तो एम के हिसाब से पासबुक इज मोर एंड दिस इज लेस. ओके ओके. उज्जवल हैज गिवन मी द लास्ट आंसर. ओके, गुड उज्जवल. I want all the others also to try. Draft deposited in the bank but not yet cleared. 13 lakh and 50,000. Draft का meaning क्या है माँ? Demand draft. ये भी checks के तरह ही है. Demand draft deposited but not cleared. Check deposited but not cleared. उसी का same meaning है. You have to add. Draft or check deposited but not cleared is the same. Deposited but not cleared is the same. Draft deposited but not cleared. It is 13 lakh and 50,000. उसको हम ऐड करते हैं. अंसारी, good. Very nice. Everybody of you are answering. I am happy. The next one is, everybody please see, very important. Bills for collection credited by the bank. 8 lakh and 36,000. बिल्स फॉर कलेक्शन का मीनिंग है आपने जो कुछ भी बिल्स रिसीवेबल है आपके पास, बैंक खुद जाके कलेक्ट किया है. तो मीनिंग इज दे हैव बीन डायरेक्टली डेपोजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट. क्या हुआ है? डायरेक्टली डेपोजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट. दैट मीन्स योर पासबुक बैलेंस टू दैट एक्सटेंट विल बी मोर, cash book will be less. Aim is in the cash book, so subtract. Bills for collection directly credited. Bills for collection directly credited. Correct. 8 lakh and 36,000. Clear, everybody? The last one. The last one. Everybody please see the last one. The last one, amount wrongly debited to the company account by the bank for which no details are available. इसका मीनिंग क्या है? ये आता है एरर के हेडिंग. So this is the one heading which I have not discussed because I told आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो you should understand it based on the transaction. तो इस पर्टिकुलर मिस्टेक का क्या मीनिंग है? Can you people tell me? Amount wrongly debited to the company account for which no details are there. That means ये मिस्टेक हुआ है बैंक पासबुक में. करेक्ट?
हम्म ये मिस्टेक हुआ है बैंक पासबुक में, रॉन्गली डेबिट हो गया है बैंक पासबुक में। दैट मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मिस्टेक? आपने गलती किया है, रेक्टिफाई के बारे में कुछ मत सोचो, अभी रेक्टिफिकेशन आपका प्रॉब्लम नहीं है। what has happened? Passbook में there has been a wrong debit. Because of the wrong debit, what will happen? Passbook will come down, and to that extent your cash book is more. That's all. Your aim is in the cash book. Due to this mistake, your passbook comes down, cash book is more. So you are supposed to add wrong debit in the bank account. That's it. You don't have to rectify. Rectification आपका problem नहीं है. The customer will take care future. So what is the answer? Can somebody tell me what is the addition of this and final answer? Or you tell me the final answer if you have done. That's all. These are the entries. Everybody? Gaganjot. 1693 600. Correct? 1693 600. Is this the answer that you're getting? Everybody? Kirtika Ja. Yes. Kritika Ja. Okay. Now, my dear students, all of you, please see this answer is in negative. Ronitsa, wrong. This answer negative or positive? You tell me. Everybody, you tell me if this is answer is negative or positive. Oh, this is positive. Oh, sorry. So it is positive. So if it is positive, what will be your last answer? Atyant, please don't raise your hand so many times. So 16 lakh 93 is positive. So it will still remain as unfavorable balance as per passbook. Because I started with cash book, I will end with passbook. Okay? Negative answer or positive answer? Positive answer only, no. Everybody clear? Yes? Everybody? Okay. Okay, Bindya Bindu. Good. Thanks. Okay. Kritika Ja, you are able to get the answer. Good. Everybody is able to answer. Mystica. Okay. Shivangi Srivatsav. Okay, good. The others I will do. Next, we are going to do the illustration number 10. Suraj Sachdeva. Is that okay? Khalid. Khalid Shaifullah. Madam, are you from Telangana? Yes, I am from Telangana. I am from Chennai. Everywhere. Hmm. Answer is positive only, no? Gaganjot. It is not negative, okay? Alicia, I will take your hand. Just, I will give chance, okay? Just give me some time. Anish Kumar, please explain the last one. Which is the last one that I need to explain, ma? The last one is wrong debit in the bank account. Okay. Anish, the wrong debit in the bank account ka meaning is that it is an error that has been committed. Okay. So tab error ho jata hai, ye wala error आपका बैंक अकाउंट में हुआ है. What is the effect of the error? आपका बैंक में से कुछ पैसा डेबिट हो गया है, तो बैंक पासबुक इज लेस, कैश बुक टू दैट एक्सटेंट इज मोर. जब आपको एरर्स आता है क्वेश्चन पे, वो आप रेक्टिफाई मत करो. दिस काइंड ऑफ अ नॉर्मल बीआरएस क्वेश्चन पे एरर्स को खुद एनालाइज करके वेदर वॉट एवर एम बुक बढ़ जा रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, जस्ट डू इट एज पर द सेम थिंग. ओके. My class is not mentioned today in the schedule. You don't want me to take the class, Ragul?
Okay. Tia, you understood. Radhika Jain, good. You're answering well. Mm-hmm. Okay, Ritik. Gurvinder Kaur, good. You got the answer. Anjana, good. Anjana, you understood. Sejal Vishwakarma. Okay. All those smileys and symbols I don't want. If you have understood, just tell understood, ma'am. Okay. Okay. Mahak has also understood. Everybody has understood. Good. Seventh illustration. Explain the fourth entry. Okay. What is the fourth entry? Not eighth question. Illustration 10, you have to start. I want all of you to start illustration 10. Whoever has finished and understood this question, don't wait for me. I am taking the doubts of the other people who did not understand. Pooja, okay, ma'am, please show me the answer once. Pooja Yadav, please see. Gaurav Pandey, I will unmute you after a little time. This is the answer. Pooja Yadav. Somebody asked me the fourth transaction in this question, correct? What is the fourth transaction? I will tell. Okay, fourth transaction, Anjana. Okay, fourth transaction, I think Anjana has asked me transport subsidy. See, Anjana, when you receive a transport subsidy, or what is a transport subsidy? Any subsidy means you are receiving money from the government and they will not give it to you in cash. They will directly deposit in your bank account. Okay, so due to this subsidy received directly in your bank account, what happens? Your passbook balance will increase. Yes, your bank balance will increase, so passbook balance will increase. To that extent, your cash book balance will be less. So that is why the transport subsidy received, you are subtracting. Okay. Okay, good. Now we are going to go ahead and see the illustration number 10, after which we will wind up the class. Okay. So today class, we have finished out of 11 illustrations, 5 illustrations is what I have taken. Simple illustrations, everything. This is a little bit difficult, but that also is actually easy. Because आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो मैडम इतना सारा है मैडम ट्रांजैक्शंस बड़ा बड़ा है but when you read them they will be very very easy. So that is one point that you people have to understand. Now illustration number 10. Okay, first one, when Nikki and company received a bank statement showing favorable balance. Okay, so first thing is Nikki and company in the books of Nikki and Company Limited bank statement you are going to prepare as on 30th June 2022 and favorable balance of what is that? So bank statement may favorable balance 10 lakh 39 200. So the meaning is the favorable balance as per which book is the starting point? You people tell me. Favorable balance as per bank statement ka meaning is passbook. The favorable balance as per passbook is the starting point. Madam, kaisa likha hai? How did you write? How did you find out? Very simple. Directly it is given in the question. They say favorable balance as per the bank statement. They are saying favorable balance as per the bank statement. Favorable balance as per the bank statement. So favorable balance as per passbook is the starting point. Everybody with me? How much is this balance? 10 lakh 39 and 200. First thing 10 lakh 39 200. Abhi dekho, favorable balance as per passbook means aim is in which book? You people tell me. Aim is in which book? Is particular question you only have to answer everything. Aim will be favorable balance as per passbook means aim will be in which book? Are you all there? Aim will be in the cash book. Good. First answer is correct. The second step here, we fixed that in the cash book. Very good. Now please start the question. A deposit of 3,09,200 paid into the bank had not been credited by the bank. Check deposited but not cleared. My dear students,
The first one का मतलब है check paid into the bank but not cleared means check deposited but not yet cleared. Check deposit means you should add or subtract. Aim is in the cash book. Check deposited, add or subtract. Check deposited, check paid into the bank but not yet cleared. You should check paid into the bank. Check deposited means you are supposed to. Gurvinder, correct. Check deposited means what you will do, yeah? Yes, add. Check deposited but not cleared. Very good. The first one, 3,09,200 you are going to add, not less. Why should you less? Check paid means not check issued. Check deposited. Check paid is deposited. Check paid is check deposited. उसका मीनिंग है the same thing. All of you please see here. The next one is very, very important. यहाँ पे देखो, on 30th March, the company entered into a hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on the 10th of each month, commencing from April 2022. No entries has been made in the cash book. First thing is this adjustment very big, but very easy. You have entered into a hire purchase agreement. Hire purchase agreement का मीनिंग क्या है? My dear students, hire purchase का मीनिंग क्या है? आप कुछ asset परचेस नहीं कर रहे हो, but you are going to the person who has the asset. You are telling बॉस आई विल यूज योर असेट, मैं आपका असेट को यूज करती हूँ और मैं उसके लिए चार्जेस आपको पेमेंट कर देती हूँ, तो उसको मैं बताती हूँ उस काइंड ऑफ अग्रीमेंट को हायर परचेज अग्रीमेंट. ओके, अभी हायर परचेज अग्रीमेंट में मैंने एंटर किया है. Okay, when did I enter into the hire purchase agreement, my dear students? Hire purchase agreement enter हुआ है अप्रैल से. That is 3 lakh rupees per month. You will get debited from my bank. Bank order है ना? Meaning is direct debit from the bank. But my dear students, you tell me directly debited from the bank account का meaning क्या है? That means 3 lakh पासबुक से जा रहा है. योर बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है. टू दैट एक्सटेंट योर कैश बुक बैलेंस विल बी मोर. डायरेक्टली पेमेंट फ्रॉम द बैंक का मीनिंग है पासबुक कम हो जाता है, कैश बुक इज मोर. कैश बुक में अभी तक इस पेमेंट का एंट्रीज नहीं हुआ है. नो एंट्रीज हैव बीन मेड. दैट मीन्स कैश बुक इज मोर, पासबुक इज लेस. सो एवरीबडी प्लीज सी हियर. हायर परचेज अग्रीमेंट का पेमेंट जो कुछ भी डायरेक्टली बैंक से हुआ है, बैंक बैलेंस कम हो गया है, बट कैश बैलेंस इज स्टिल मोर ओनली. नाउ यू टेल मी, मैं कितना लिखना है अमाउंट? हाउ मच इज द अमाउंट आई हैव टू राइट? वेरी गुड सेजल विश्वकर्मा. मैडम, April 10th फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैडम. April 10th गया. Again, May 10th second installment, madam, that is also over. And June 10th is the third installment, madam, that is also over. But these three entries record नहीं हुआ है, madam, cash book में. तो not 1 month, 2 month, 3 months totally. 3 lakh into 3, 9 lakh rupees. Why, madam? Three installments is over. ओके आपको इस तरह का एडजस्टमेंट्स को बार बार प्रैक्टिस करने से ही यू विल गेट अ ग्रिप ओवर दैट. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, आज ही जाके ये सारा के सारा एडजस्टमेंट्स पढ़ लो. नोट्स लिखो इन वॉट एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल. प्लीज राइट द नोट्स. अंडरस्टैंड, ट्राई द सम 2 to 3 times. इट विल बिकम वेरी वेरी इजी. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हायर परचेज अग्रीमेंट का पेमेंट डायरेक्टली बैंक से देने से बैंक का पासबुक बैलेंस कम हो जाएगा. टू दैट एक्सटेंट योर पासबुक बैलेंस, योर कैश बुक बैलेंस इज मोर. व्हेन यू मेक अ पेमेंट फ्रॉम द बैंक, पासबुक reduces, कैश बुक विल बी मोर. नाउ यू आर गोइंग टू ऐड, बट इसमें एक और एडजस्टमेंट है. अमाउंट नॉट 3 lakhs, बट अमाउंट विल बी 3 lakh into 3. Amount will be 3 lakh into 3. Just give me 1 minute.
हाँ, my dear students, कैसा 3 months का क्वेश्चन पढ़ना है? You should read the question. I will show you the question. Please see the question. यहाँ से 10th of each month commencing from April. So April से start हुआ है. मैं when am I making the BRS statement? 30th June को मैं BRS बना रहा हूँ. So April, May, June I have considered. Clear everybody? Now my dear students, let me talk about the fourth particular thing. Bank charges amounting to 3000 has not been entered in the cash book. इसका मीनिंग क्या है? बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है पासबुक से, तो पासबुक विल बी लेस, कैश बुक विल बी मोर. तो बैंक चार्जेस डेबिटेड, यू आर गोइंग टू एड. हाउ मच इज द बैंक चार्जेस डेबिटेड? 3000. ऑल ऑफ यू प्लीज सी, बैंक चार्जेस विल बी 3000. क्लियर? इसमें थोड़ा डाउट है? थर्ड वन यू वेट, उज्जवल, आई एम कमिंग बैक. थर्ड वन थोड़ा वेट करो, आई विल कम. Clear? Fourth one is clear, everybody? Everybody, fourth one is clear? Now we come to the fifth one. On 28th June, a customer of a company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry has been made in the cash book. तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली कुछ अमाउंट डिपॉजिट हुआ है बैंक अकाउंट पे, तो इसके वजह से when the amount gets directly deposited into your bank, passbook will be more, cash book will be less. Good. Aim is in the cash book, so direct deposit by the customer will be subtracted because passbook balance is more, cash book balance to that extent is less. This is 4 lakhs. Clear everybody? Now the next point. All of you please see. 11,200 paid into the bank has been entered twice in the cash book. यहाँ एक मिस्टेक हुआ है. द सिक्स्थ एंट्री का मतलब है मिस्टेक हुआ है. ओके, द सिक्स्थ एंट्री टॉक्स अबाउट अ मिस्टेक और अ एरर. किस बुक में हुआ है? कैश बुक में हुआ है. व्हाट इज द मिस्टेक? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मिस्टेक क्या है? एक वाला चेक 11,200 जो उसने रिसीव किया है, पेड इनटू द बैंक का मीनिंग क्या है? चेक डिपॉजिट हुआ है. तो 11,200 का एक चेक एक बार रिसीव हुआ है, बट मैंने हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटर्न दैट चेक? 2 टाइम्स मैंने इस चेक वैल्यू को डेबिट किया है कैश बुक में. व्हाट हैज हैपेंड? 2 टाइम्स मैंने रॉन्गली डेबिट किया है इस पर्टिकुलर चेक वैल्यू को. डिड यू अंडरस्टैंड मिस्टेक? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? आई वांट एवरीबडी ऑफ यू टू आंसर. कैश बुक में मिस्टेक हुआ है. कौन सा मिस्टेक? एक चेक जो मेरे को मिला है, मैं उसने बैंक में डिपॉजिट किया है, बट व्हेन आई एंटर्ड इन द कैश बुक, एक बार ही आई शुड हैव एंटर्ड, बट मैंने गलती से 2 बार एंट्री किया है डेबिट साइड पे. दिस इज अंडरस्टूड? Okay. So now when 2 times I have entered the same check, what will happen to my cash book balance? Debit balance will be more. So cash book automatically will be more. Correct? पासबुक में एक ही बार आएगा 11,200. So passbook will be less. To that extent, your cash book will be more. So this mistake you don't rectify. Your problem वो उसको करेक्ट करना नहीं है. क्या है मिस्टेक? उस मिस्टेक के वजह से कैसा बुक्स मूव हो रहा है, तब कैश बुक में 2 टाइम्स डेबिट करने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है. तो अभी यू विल बी राइटिंग चेक wrongly debited twice. तो 11,200 ही लिखना है, बिकॉज 1 टाइम ऑलरेडी करेक्टली यू हैव डन. ओके, द डिफरेंस अमाउंट इज ओनली 11,200. तो इसको मैं यहां पे लिख देती हूं. इज दिस क्लियर बाय एवरीबडी? आई वांट एवरीबडी ऑफ यू टू आंसर. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इजी, नथिंग एल्स इज देयर. अंजना, अनीश, उज्जवल. ओके, गुड. नेक्स्ट श्रीवत्सव. ओके, श्रीवास्तव, रवि. गुड. नेक्स्ट कृतिका जा. ओके, others? I want everybody of you to answer. Mahak,
Where are you, Mahak? The others, Ravi. And then I've seen Alisha, Tia, huh, Bindya, correct. Others? Okay, good. Prayush, okay. Prayush Rai. All of you please see. All of you please see. इसी तरह का मिस्टेक है थर्ड वन ऑल्सो. मैंने थर्ड वन को स्किप किया है ना. Now please see, a customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakhs paid the firm a check on 12th of June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. तो क्या हुआ है? आपको एक चेक मिला है. Everybody of you please see. आपको एक चेक मिला है. कितना है वैल्यू चेक का? नाउ द थर्ड थिंग. ओके, दिस इज सेकेंड वन. थर्ड, अभी आपको एक कस्टमर ने चेक दिया है. कितने का? 4 lakhs is the value of the check, but you have given him a discount of 16. How much is the discount percentage? 4% is the discount that you have given. तो वो चेक कितने अमाउंट का they will give? Okay. How much amount will be given here? 4 lakh minus 4 percentage. So all of you please see 3 lakh, this is 16,000. 3 lakh 84,000 मिला है आपका चेक. कितना मिला है? 3 lakh 84,000 का मिला है चेक. तो यहाँ पे पासबुक में करेक्टली 3 lakh 84,000 का एंट्री हुआ है बिकॉज चेक में 3 lakh 84,000 इज रिटर्न. बैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी मिस्टेक हुआ है कैश बुक में. कैशियर ने मिस्टेक किया है एरोनियसली. वो क्या किया है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3,84,000 उसने लिखा है 4 lakh rupees इन द बैंक कॉलम. व्हेन यू प्रिपेयर 3 columnar कैश बुक, आपको लिखना है 3,84,000 इज द रिसिप्ट एंड डिस्काउंट अलाउड में 16,000 आना है. करेक्ट. 2 सेपरेट कॉलम्स होना है. बट यहाँ पे कैशियर भूल करके ही हैज टेकन द एंटायर अमाउंट ऑफ 4 lakhs इन द बैंक कॉलम. तो अभी आप बताओ इस पर्टिकुलर मिस्टेक से कौन सा बुक इज मोर? विच बुक इज मोर? कैश बुक या पासबुक? विच बुक इज मोर? Cash book is more. So due to the mistake, cash book is more. So I have to see the aim is in the cash book. So I have to add here. All of you please see, I'm writing here. Mistake, what is it? Gross amount entered erroneously. दैट इज कितना अमाउंट लिखना है मैडम? 4 lakhs लिखना है? 3,84,000? नो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 16,000 उस डिस्काउंट में जो कुछ भी मिस्टेक हुआ है उसी के वजह से ये डिफरेंस है. सो आई विल राइट 16,000. आई विल राइट 16,000. इज दिस क्लियर एवरीबडी? चेक इज नॉट येट डिपॉजिटेड. आपका कुछ लेना देना नहीं है. एवरीबडी प्लीज सी द चेक. इवन इफ इट इज नॉट डेबिटेड और इट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑल्सो, उज्जवल, उसका मीनिंग क्या है? चेक में 3,84,000 है बट कैश बुक में मैंने गलती से 4 lakhs रिटर्न. I have returned wrongly 4 lakhs in the cash book, but the check value is only 3,84,000. टुमारो इवन इफ आई एम गोइंग टू डिपॉजिट, मैं कल डिपॉजिट करती हूँ, मैं परसों करती हूँ, यानी नेक्स्ट हफ्ते करती हूँ, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. इन दोनों के वजह से कौन सा बुक इज मोर? इट इज नथिंग बट कैश बुक में थोड़ा ज्यादा अमाउंट आपने लिख लिया है. वो वाला डिफरेंस को आप यहाँ पे ऐड करते हो. क्लियर एवरीबडी? नाउ वी गो टू द लास्ट transaction. Everybody please listen to me. A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th of July. तो 5th of July का क्या हुआ है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. बट जस्ट रीड द फर्स्ट सेंटेंस. एवरीबडी रीड द फर्स्ट सेंटेंस. कुछ डेट आउट ऑफ डेट होने से चेक डेबिट होके वापस, लाइक चेक रिटर्न्ड,
चेक डिसऑनर हो गया है। तो चेक डिसऑनर का इफेक्ट क्या है, प्लीज लिसन केयरफुली। व्हेन चेक गेट्स डिसऑनर्ड, आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाता है, बिकॉज अर्लियर बैंक उसको क्रेडिट किया होगा। व्हेन यू टेल डिसऑनर्ड, रिटर्न्ड, चेक बाउंस होने का टाइम पे आपका पासबुक से वो अमाउंट डेबिट होता है। तो व्हेन इट गेट्स डेबिटेड, cash book to that extent will be more. That's all. A debit in the passbook, a debit in the bank statement का meaning है passbook कम है, cash book ज्यादा है. So here again you are going to add that check marked out of date. वो है 11 lakhs का. तो just only 1 4 lakhs will be subtracted, everything else will be added. तो यू डोंट हैव टू बहुत सारा कंफ्यूजन मत लो। यू आर लाइक मैडम कुछ, इवन इफ आई रीड द अदर थिंग्स दैट इज मेकिंग मी गेट कंफ्यूज्ड, नो, इवन इफ यू डू, हाँ, but whosoever receiving in money in the bank will not make an entry. Whoever is receiving the money in the bank, Ujjwal, in your bank account कितना पैसा आएगा? 3,84,000, no? No, what is the doubt that you asked? Ujjwal, you're talking about the last one. See, the problem here is you have no information whether they have already credited this particular check. आपको information दिया है चेक का डेबिट हुआ है and it is sent out. तो तब डेबिट हुआ है, उसने क्लियरली दिया है, इट मीन्स दैट योर पासबुक बैलेंस इज reduced. दैट्स ऑल. उतना तक सोचो. डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ एंड थिंक सो मेनी थिंग्स टुगेदर. Clear? Can somebody tell me the answer? Ronit Shah, the answer that is coming is plus positive. Don't raise your hands. I'm unable to see what the answer is here. Gaurav Pandey, others, please wait. What is the answer? Radhika, what's the answer? Okay. 29 lakhs 78,600. 29 lakhs 78,600. It is positive. So favorable as balance as per passbook. The end answer will be favorable balance as per cash book. That's all. Clear? With this, we are completing today's session. Is Priyamvada there? Yes, yes. Yes. Hello, Hiranmai. Hi, Priya. Thank you for such valuable session. Let's ask some queries. If students have some queries regarding this, can Sure. you please raise your hands and ask your queries? Already 2 people have raised, but I'm not Yes, able to yes. unmute them. Wait. We'll unmute. Okay. Gaurav has been allowed to unmute. Hello, good afternoon. Good I afternoon, audible. Gaurav. Yes. Yes. तो माय मैम मेरा डाउट ये है ना कि व्हेन आई अनफेवर या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक बैलेंस जब रहता है तो उसको मैं माइनस में भी तो लिख सकता हूँ। Sorry. Yeah. ओवरड्राफ्ट जब बैंक बैलेंस पासबुक में शो करेगी तो वो तो मेरा माइनस में नहीं रहेगा बैलेंस। No, I'm not able to जिसको understand. Priya, did अनफेवर you? Overdraft balance, Hiranmi, I got it. Overdraft Okay. balance अगर करेंगे पासबुक as per our passbook, is this a minus balance? यही है ना आपकी query, Gaurav? या Hello. यही यस यस मैम यही क्वेरी। हाँ. देखो दो ट्रीटमेंट्स होती हैं. फॉर्मेटिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं और नॉर्मल स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं. जो जब बैंक अकाउंट में बैंक पासबुक में जो बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस इज आवर बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस इज आर ओवरड्राफ्ट बैलेंस. ओके. Okay. फॉर्मेटिंग तो मैं वैसे कर सकता हूँ ना, जैसे माइनस मैंने डाल दिया, अब मैम ने जो लॉन्ग डेबिट वाला लास्ट क्वेश्चन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग जब माइनस में डालूँ तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऐड होना चाहिए, पर मैम ने तो माइनस किया क्योंकि उन्होंने प्लस में स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। So that is तो why. मैं That is the अगर difference. माइनस वो सारे डिफरेंस ना हो ऑपोजिट हो जाएगा तो जाएंगे दोनों अगर आप अप्रोच माइनस से स्टार्ट करेंगे तो. माइनस दोनों अप्रोच सही है ना, इसमें कुछ हाँ ICAI जी, वगैरह दोनों तो अप्रोच नंबर नहीं सही ना है. चेक आपके स्टडी मटेरियल में दोनों अप्रोचेस दी गई हैं. आंसर करेक्ट होना चाहिए, हाँ प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस.
गॉट इट, थैंक यू। Okay. बस एक क्वेरी था। Okay. Rahul? The other. कैन आई Yeah, please mute yourself. Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, can I speak Tamil? Yes, please. மேம் எனக்கு சுத்தமா ஹிந்தி புரியல மேம் நீங்க எடுக்கிறது. இல்ல எனக்கு புரியுது. நீ வந்து see the point is see Priya here the point is Rahul no he's been asking from the beginning of the start of the class that please explain to me in English, but due to that crowd where we have the majority of people sitting no, so that is one point, so just that's it. I'll just answer to him in Tamil, so that's fine, right? Yeah. யா ஓகே. ஸோ ராகுல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மன்னிச்சுக்கோப்பா, நான் வந்து வேணும்னு பண்ணல, ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட்ல நான் வந்து எடுக்கிறப்போ கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன், பிகாஸ் எல்லாருமே சவுத் இந்தியால இருந்தும் பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீ வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி லைக் நீ முன்னாடி கிளாஸஸ் கூட பார்த்தேன்னா நான் வந்து மேம் கம்ப்ளீட்டா நீங்க மேம் நீங்க இந்த அக்கௌண்டிங் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா சொல்றது கூட ஹிந்தில சொல்றீங்களா? எனக்கு சுத்தமா எதுவுமே புரியல, அப்படியே பிளாங்கா போகுது எல்லாமே. இல்ல ஐ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், எனக்கு புரியுது. லாங்குவேஜ் இஸ் அ பேரியர். அது புரியலன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கிற கான்செப்ட் கூட ரொம்ப கஷ்டமா தான் தெரியும். இது வந்து அது மாதிரி ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் தான். நான் ஒன்னே ஒரு வாட்டி நான் கேக்குறேன், இன்னைக்கு நீ திருப்பியும் போயிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு வாட்டி உட்காந்து நீ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணு, ஓகேவா? திருப்பியும் கேளு கிளாஸ், ஓகேவா? கேட்டனா கொஞ்சமாவது உனக்கு வந்து அந்த இது வரும். பட் ஆனா வந்து என்ன வந்து இப்போ இங்கிலீஷ்ல எடுக்க சொன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான், பிகாஸ் எனக்கு இங்க கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஹிந்தில தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது அதுக்காக தான் பேச வேண்டியதா இருக்கு. இல்லாட்டி எனக்கு இங்கிலீஷ்ல எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். சரியா? என்ன அதை மேம் பத்தி மட்டும் மன்னிச்சுக்கோ. பட் ஆனா இன்னொரு வாட்டி பாரு. மேம் எக்கனாமிக்ஸ் வேணா சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹிந்தில சொல்றாரு. எல்லாருமே அது போல் சரி, தான் சொல்றாங்க. நீங்க ஃபுல்லாவே ஹிந்தில எடுத்துன்னு போறீங்க. அப்படியா? சரி, ஓகே. ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் டெல் இன் ஹிந்தி, அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டாக் இன் மேம் இங்கிலீஷ். மேம் சரியா? ஹிந்தி வேணாம் மேம், ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல எடுத்து. சரி, ஓகே. இங்கிலீஷ்ல எடுத்துறேன், அப்புறம் ஹிந்தில எடுக்கிறேன். சரியா? மேம் மறந்துட மாட்டீங்களா? இல்லப்பா, கண்டிப்பா. ஓகே மேம், தேங்க்ஸ் மேம். தேங்க்ஸ்ப்பா. So Priya, the thing is, I am taking fully in Hindi, it seems, Priya. So you see, I've learned Hindi also. So the complaint is he wants me to take first completely in English and then shift over to Hindi. Yes, that will Okay. work. In fact, many students from South do expect that. Yes, please, you can continue with the Hindi, English, both the things. But yes, first in English, if it is possible. Sure, okay. Yeah. Yeah. Anything else? Anyone else wants to ask something? I think done. Okay. Okay. Thank Okay. you. Okay, today I'm here. Hello, Yeah. Hirme. I'm Rashmi Goel. Oh, hi, mom. Good Hello, how are afternoon. you? I'm good. How are you, mom? Fine. And thank you for taking the classes. Yeah. Today, I ask all the students to please leave the class, but I want to have a conversation with Akshit. Okay. Akshit, if you are here, stay on this the link, and we would discuss, and the rest the students can leave the class. Okay. Me also, no, mom. I can Yeah, also. please, Yeah. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, mom. Please, you can ask your query in the next class also. We'll be having another class also. Please come on Wednesday. Yeah. Okay. Yes. Thanks. नहीं आप रुकिए. अशोक जी एक सेकंड. अशोक जी आप रुकेंगे और अक्षित रुकेगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स को जाने दो. Student, please leave the session. अक्षित 2 जगह से आपने लॉग इन कर रखा था, अब 1 रहा है आपका. एक काम करो, बाकी स्टूडेंट्स को आप अगर आपने निकाल दिया तो शाम की क्लास में प्रॉब्लम होगी ना उनको ज्वाइन करना नहीं है. नहीं वो कर लेंगे. है ना, तो आप बाकी को निकालो. और हाँ बिल्कुल. I've seen Miss Pooja Sutar, Miss Ritik. Please leave the session. You will have your second class at 2 p.m. for business law. Please join at that time.
मिस्टर राज या पूजा यादव, वर्धन, राज सिसोदिया, अक्षित गए? हाँ, अक्षित भी। अब अक्षित आता है ना, तो उसको कह देना कि अब ही हैज लॉस्ट द राइट ओके टू सीक एनीथिंग, क्योंकि मैंने बुलाया था ना उसको। ये टेक्निकल सपोर्ट से पूछो। चलो अभी लेस हम वेट कर लेते हैं 5 मिनट, हो सकता है वो दोबारा आ जाए, ठीक है ना। ये सूरज सचदेवा अभी तक क्यों है यार? ये Other students, please leave the session. इसका मतलब ये बच्चे लॉग इन करके बैठे हुए हैं बस, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। हाँ करो। ये रहा। बच्चे भी बहुत क्वेरीज पूछता है। अशोक जी, यूट्यूब का लाइव बंद कर दीजिए। ये देखो, ये